Hello and welcome back to another exciting video of class 1 computer, and today we are going to start our very new lesson, and the name of a lesson is parts of computer. As we have already learned a lesson introduction to computer, and in that we have learned what is computer. So computer is electronic device which need electricity, which take input from input devices, process on it. We use it for many other things like uses also we have seen. So here we are going to learn about parts of computer, but before that tell me which parts do you know, which parts do you know. Like if I'll ask you about the body parts, like here one cute boy is there like yours, okay, it is in his school uniform. So you have to observe the picture and name the different body parts. So what we can see here, we can see eyes, two eyes are there, ears are there, nose is there, lips, cheek, hands, fingers, many parts are there. So how many parts could you name? Yes, 8, 10, 5. Okay, so these are the parts, so we will name them one by one. So here are some parts of a body in detail, like ear, teeth, chin, shoulder, arm, then tummy, then hips, leg, foot, head, eye, nose, lips, elbow, skin, wrist, hand, okay, hand, fingers, knee, ankle, toes. These all are our body parts. But these are only body parts, right? But we are learning computer. So what is the relation of a body parts with a computer? Yes, we have body parts. So likewise, computer also has some parts. Like computer has its own body, so it has also body parts. And how many parts are there? Many are there, but their main body parts, like which are the main body parts of ours? Feet, hand, eyes, and your mouth. These are the main body parts. Like likewise, computer also has four main body parts. How many? Four main body parts. And which are those? Those are monitor, keyboard, CPU, and mouse. You can see in this picture. So monitor, keyboard, CPU, and mouse. So this monitor, it looks like your TV, right? Yes, you have seen in your home, at your home. Then this is second one is keyboard, which is a rectangular, and CPU is a box like structure. And then we have a mouse, which is not a real mouse. This is artificial mouse used for various purposes. So we have learnt four main parts of computer. Which are those? First one is monitor. Second one is mouse, and third one, this long, is keyboard, and that box is CPU. So these four main parts are there of computer. Now we know what is function of our hand. Using hand we can catch, we can throw, we can count, we can do many things using this finger. By using eyes we can see, using mouth I can speak, using ears I can listen also. So what are the body parts that we are going to learn? But which body parts? Body parts of computer. So one by one we will go through all those parts. So are you ready for this? Okay, तो हम अब क्या देखने वाले हैं? फोर मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ माय, राइट? नो, फोर मेन पार्ट्स ऑफ आवर कंप्यूटर. आपने देखा होगा कंप्यूटर तो बहुत सारा होता है, उसमें बहुत सारा सामान होता है, बट मेन चीजें कौन सी है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू. सो चलो देखते हर एक पार्ट को डिटेल में. ओके, so first part of your computer system is CPU. Now किसी को लगेगा ये CPU ऐसे कैसे नाम है? How it is called CPU?
सीपीयू ऐसे कैसे नाम दे दिया है? तो सीपीयू छोटा वाला नाम है, सीपीयू इज शॉर्ट नेम ऑफ दैट बॉक्स बिकॉज CPU stands for Central Processing Unit. What is the full form of CPU? जो छोटा फॉर्म करते हैं CPU, लाइक किसी का नाम अनिकेत होगा तो हम उसे प्यार से क्या बोलते हैं? अनु, अनु, अन्ना, लाइक दैट. ओके. किसी का नाम प्रियंका होगा, कोई लड़की होगी हमारे क्लास की, उसका नाम प्रियंका होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिया, प्रिया, शॉर्ट में. So likewise, our CPU name also in a short form, it is called CPU. But if it is in full form, it is Central Processing Unit. What it is? Central Processing Unit. Repeat after me. Come on, repeat after me. Central Processing Unit. Okay. Now, hard word है ना, तगड़ा word है. इसको हम डिवाइड करेंगे. सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल. प्रोसेसिंग, PROCESSING, यूनिट, UNIT, unit. So CPU stands for, or what is the full form of CPU? It is Central Processing Unit. Got it? Now, it is the most important part of your computer, or we can say it is the brain of your computer, because it performs all the tasks that we want. जो हम गाने सुनते हैं, जो हम मूवीज देखते हैं, जो हम कुछ गेम्स खेलते हैं ना, all those things are done by this CPU. This dabba is doing all those things. Okay, so that is why this box, this cabinet, cabinet मतलब वो जो डब्बा है, बॉक्स, उसको कैबिनेट कहते हैं. Okay, so it is most important part and it performs all the tasks that we want to a computer should do. Like if we want our computer to do mathematical operation, it will do. If you want to watch a movie, that also it can play. If you want to listen to songs, your favorite song, that also it can play. And how much data you can store in your brain? Like आपको कितने मोबाइल नंबर पता है? 10 मोबाइल नंबर पता है. आपको कितने पोएम्स पता है? आपको 12 पोएम्स पता है. आपको कितने सॉन्ग पता है? आपको 15 सॉन्ग्स पता है. But our CPU can store lakhs, million, crores of numbers, crores of songs and all that. So it can store large number of games, movies, songs, books, anything. If you want to save anything, it can store it and it will not forget also. It will never forget that also. That is why it is most important part of your CPU. Okay. So CPU is most important part of your computer system and it does all those operations. Okay, understood? Now, दिख रहे हो? दिख रहे हो ये कैसे घूम रहा है? दिख रहे हो? That is your CPU. CPU means Central Processing Unit. Now, it also controls all the devices. Like we have brain. Can we see brain? No, we cannot see. अगर हम brain देखेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे. So we cannot. Okay, but it is there. So it works like a brain of our computer. हमारा brain क्या करता है? हमारे हाथ को कंट्रोल करता है, हमारे आईज को कंट्रोल करता है, हमारे ईयर्स को कंट्रोल करता है. It controls all our body parts, right? So likewise, our CPU also controls all the devices of computer, like keyboard, the monitor, the mouse, the speaker, any other devices. जो भी devices हम हमारे CPU को connect करते हैं, all those devices are controlled by CPU. Means CPU is their boss. Without the permission of CPU, they cannot do anything, and that is why CPU is also known as brain of
computer. Why CPU is known as brain of computer? Because it does all the processing and it also controls all other devices. CPU क्या करता है? कीबोर्ड को कंट्रोल करता है, माउस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर को कंट्रोल करता है. अगर ये एक डिवाइस सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है तो सेम फंक्शन इज डन बाय आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन भी सेम करता है ना, वो हमारे बाकी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. तो दैट इज व्हाई CPU is known as brain of computer. Understood? Who is the brain of computer? CPU is brain of your computer. This black wala dabba is brain of your computer system. And all the devices. आप कहेंगे ये कैसे कंट्रोल करता है? ये उन्हें थोड़ी ना जाके बोलता है ये टाइप करो वो टाइप करो. फिर ये कैसे कनेक्ट करता है, ये कैसे कंट्रोल करता है उसको? हाउ इट कंट्रोल्स? दैट इट कंट्रोल्स देम बाय अटैचिंग देम टू इटसेल्फ. मींस इफ यू वांट टू यूज कीबोर्ड और माउस, अगर आपको कीबोर्ड या माउस यूज करना है, सो यू हैव टू अटैच दैट, यू हैव टू अटैच दैट कीबोर्ड और माउस टू द CPU. अगर हम CPU को कनेक्ट करेंगे तभी वो चलेगा. सो अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो बॉस कौन होगा? वही होगा बॉस. समझे? So that is why CPU is brain of your computer and all the devices are connected to your CPU, right? Okay, so this was the first device that we have seen. Now we are going to see the second body part of our computer system, and that body part is, what is that body part? Monitor. You all have seen monitor? Yes or no? Tell me yes or no. Yes, we all have seen monitor at your home, in your father's or mother's office, at some grocery stores या कहीं और शॉप में, मगर आपने मॉनिटर देखा है. या आपने टीवी देखा है? टीवी. सो टीवी इज सेम लाइक मॉनिटर, बट फंक्शन अलग अलग है दोनों के, बट they look same, near about they look same. So monitor is a screen. Okay, monitor is screen that display what you are doing on a computer. जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हो ना, जो भी ड्राइंग कर रहे हो, जो भी टाइप कर रहे हो, where it will be shown? It will be shown on the monitor. Where it will be shown? The one which rotates, there it will be shown. It will be shown on monitor. So monitor is screen. What it is? It is screen. TV का screen जैसे होता है, मोबाइल का screen के जैसे होता है. So it is same like that. It is a screen that displays what you are doing on your computer. If you are typing, that also it will show. If you are some drawing, that also it will show. Okay, so all those things will be shown on the monitor. So monitor is a new word. So what is the spelling of monitor? M-O-N-I-T-O-R, monitor. Okay, and screen also new word. S-C-R-E-E-N, screen. So screen, it is a screen, flat screen which shows what you are doing on your computer. जो भी आप करोगे, टाइप कर रहे हो वो भी दिखेगा, कुछ लिख रहे हो, मीन्स इफ यू आर ड्राइंग इन पेंट, दैट विल बी शोन. आप मूवी देख रहे हो, दैट विल बी शोन इन योर मॉनिटर. इफ यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स, दैट आल्सो बी शोन ओवर देयर. आप अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो भी वहां पे दिखेगा. मीन्स मॉनिटर वाला सब देख रहा है, राइट? सो अनदर थिंग, एंड व्हाट इट शोज, ये दिखाता क्या है एक्चुअली? सब दिखाता है, सब दिखाता है. क्या दिखाता है? दैट मॉनिटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू. जो हमने सीपीयू देखा पिछले इसमें, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दैट मॉनिटर इज कनेक्टेड टू योर सीपीयू, एंड जो भी रिजल्ट, वट एवर द प्रोसेसिंग विल बी डन, जो भी योर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज योर सीपीयू विल टेल to monitor to show. That CPU will tell or inform
monitor to show this. Like if you are watching a movie, so CPU will tell monitor to show movie to us. Means brain boss CPU, मॉनिटर का काम क्या है, सिर्फ दिखाओ, जो भी सीपीयू बोलेगा वो क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. सो मॉनिटर शोज द रिजल्ट which is done by the CPU, and it is same like our TV. As we discuss, it is same like your television screen. Now can you see this device, a flat screen है, उसके ऊपर कोई तो क्या कर रहा है, किच 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 टाइप कर रहा है, राइट. सो दैट फ्लैट डिवाइस इज कॉल्ड कीबोर्ड. इट इज फ्लैट एंड नंबर ऑफ कीज आर देयर, मोर देन 100 कीज आर देयर. कीज मतलब बटन, उस पे कितने बटन है, मोर देन 100 बटन है उस पे. सो कीबोर्ड स्पेलिंग KEYBOARD, KEYBOARD, दैट इज कीबोर्ड. तो आपने देखा है कीबोर्ड ब्लैक वाला जो आ रहा है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड? सो यूजिंग कीबोर्ड यू कैन टाइप मतलब जो हम यहाँ पे दबाएंगे वो सेम कहां पे आएगा, आपके स्क्रीन पे. सो दैट इज कॉल्ड टाइपिंग. सो जो हम लिखते हैं वो हम टाइप भी कर सकते हैं. ओके, सो यूजिंग कीबोर्ड्स बटन वी कैन प्रेस देम, और हम क्या करेंगे, हमारा लेटर हो या फिर नंबर हो, जो भी है हमारे कहा दिखेगा, वो स्क्रीन पे दिखेगा. सो यूजिंग कीबोर्ड वी कैन टाइप लेटर्स एंड नंबर्स. ओके, हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक बटन हमें ढूंढना पड़ेगा. सो हाउ मेनी कीज आर देयर? देयर आर मोर देन 100 कीज आर देयर. सो के ऊपर की है पूरे अल्फाबेट्स A to Z, 26 alphabets are there na. So all those are there. Then numbers are there, 0 to 9 numbers are there. Then function keys are there. ऐसे करके बहुत सारे कीज है जो टोटल में 100 से ऊपर हो गए. ओके, सो कीबोर्ड देखना है आपको, ये रहा कीबोर्ड, आपने देखा है ना ये. सो अब काउंट करो, हाउ मेनी कीज आर देयर, देख रहे हो? हाँ, सो यू कैन सी ABCD वाला पूरा है उसके ऊपर, नंबर भी है उसके ऊपर, सम फंक्शन कीज भी है उसके ऊपर. सो ऑल टुगेदर मेनी कीज आर देयर. काउंट. Okay, so this was about keyboard. Now next part of your computer system is mouse. This is like hand of your computer's body. Okay, like keyboard is also one hand, but this is another hand and main hand of your computer. Mouse, MOUSE, mouse. जैसे हम माउस बोलेंगे तो कौन सा माउस याद आएगा हमें, वो चूहा, राइट. बट दिस इज नॉट चूहा, दिस इज द स्मॉल डिवाइस. इट इज लाइक माउस, इट हैज अ टेल आल्सो, बट इट इज यूज्ड टू पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट मतलब इसके साथ में वो जो एरो देख रहे हो आप, एरो वाला, एरो ये वाला. सो दैट एरो इज प्रेजेंट ऑन स्क्रीन. ये एरो हमें कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पे. और जब हम ये माउस इधर उधर घुमाएंगे तो सेम एरो भी क्या होगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता रहेगा. सो इट इज यूज्ड टू पॉइंट मतलब दिखाने के लिए. सेलेक्ट मतलब कुछ अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर हम जाके क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट दैट एटम. एंड अगर कोई फोल्डर होगा तो वो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ओपन भी होगा. सो माउस इज डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट मतलब कुछ दिखाना हो एरो से, इस एरो से अगर कुछ दिखाना हो उसलिए, कुछ क्लिक करना हो उसलिए यूज होता है. और इट इज कनेक्टेड टू सीपीयू यूजिंग वायर. तो मैंने पहले भी बता दिया सीपीयू को सब डिवाइसेस कनेक्ट है. तो माउस आल्सो कनेक्टेड टू सीपीयू यूजिंग वायर, बट माउस कैन बी वायरलेस आल्सो. सो it is connected to CPU, and as I said this arrow is there na, that arrow is called mouse pointer. What it is called, mouse pointer. Pointer means जो हम दिखाता है ना, like my finger is pointer. So mouse pointer, it is mouse pointer used to show something. Okay, so हम जब माउस अपने इधर उधर घुमाएंगे हमारे टेबल पे तो सेम टाइम, like here I am moving a mouse and you can see on your screen
that arrow is also moving. You can see that yellow arrow is there. That arrow is also moving. That is because it is connected to mouse. So mouse, if we'll see mouse in detail, so here also you can see mouse. Okay, that mouse has two buttons. One is a left click button, another is a right click button, and in center one scroll wheel there. So in total we can see three button also: left click, right click, scroll wheel. Scroll wheel is the center, जो पहिया होता है ना, गोल व्हील, जिसको हम गुर 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 हम मूव भी कर सकते हैं, मीन्स we can scroll it. So mouse has how many buttons? Two buttons, which are left click, right click, and center wala scroll wheel is also there. And what is the use of this? As we said, it is used to point, जो पॉइंट करने के लिए होता है, बट इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रॉइंग पिक्चर्स इन पेंट, इट कैन बी यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑल्सो. तो ये बड़ा वाला माउस देख लो, इसका जो टेल जो जा रहा है, दैट वायर इज कॉल्ड टेल, एंड दैट वायर गोज एंड कनेक्ट्स टू योर सीपीयू. सो माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस. उसके साथ में क्या होता है? एरो. दैट एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. व्हाट इट इज कॉल्ड? Mouse pointer. And that mouse pointer is present where? कौन शो करता है पूरा स्क्रीन? ऑन मॉनिटर. सो माउस से हम क्या कर सकेंगे? इधर उधर क्लिक कर सकेंगे, ड्रैग कर सकेंगे, स्क्रॉल कर सकेंगे. सो दिस इज माउस. सो ये वायर वाला हो गया. माउस कैन बी वायरलेस ऑल्सो. बिना वायर का भी माउस होता है, समझे? तो माउस वायर वाला भी होता है, बिना वायर वाला भी होता है. बिना वायर वाले के साथ में क्या होता है? वो छोटा सा चिप देख रहे, वो चिप हमें कंप्यूटर के सीपीयू को लगाना पड़ेगा, एंड हम बिना वायर के भी उसको यूज कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड वायरलेस माउस ऑल्सो. अंडरस्टूड? सो व्हाट वी हैव लर्नड? वी हैव लर्नड फोर मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. व्हिच आर दोज? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, एंड CPU. CPU stands for Central Processing Unit, which is the brain of computer, and all devices are connected to CPU. Then we have learnt about monitor. Monitor is screen which shows whatever we do. Okay. Then mouse. Mouse is a small device connected to CPU. It has two buttons and one wheel. Left click, right click, and one wheel. And उसके साथ में एक एरो भी अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर. राइट. एंड देन एक रेक्टेंगुलर फ्रेम वी हैव सीन. रेक्टेंगुलर डब्बा देखा हम, रेक्टेंगल वाला, उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, कीज होते हैं. इट इज कॉल्ड कीबोर्ड. कितने कीज होते हैं? मोर देन 100. व्हाट इज इट्स यूज? टू टाइप लेटर्स, टू टाइप नंबर्स. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. रिमेनिंग पार्ट वी विल बी कवरिंग इन अवर नेक्स्ट पार्ट. सो सबको घर पे रहना है, अच्छे से खुद की सेहत का ध्यान रखना है, और लास्ट 2 लेसन के वर्कबुक एक्सरसाइजेस आपने सबमिट नहीं किए तो आपको वो कंप्लीट करने हैं. बिटवीनस पोर्टल पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, वहां से लॉगिन करके आपको वो अपलोड करने हैं. और आपको टेक्स्ट बुक अगर मिल गए हैं तो उसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. अगर नहीं मिले हैं तो हम आपको बुक भी सेंड कर रहे हैं, उसका एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा लेना है. और always take care of yourself. Stay home, stay happy. Thank you. Bye bye.